Assalamu alaikum. But in this video lecture, I have to deliver the benign and the malignant conditions of the uterus and some benign conditions of the cervix as well. So I'll start with the benign lesions of the cervix, then some benign lesions of the uterus, and then the malignancies of the uterus, especially the CA endometrium, right? So let's start with some lesions of the cervix, and I hope you know a little bit about the anatomy of the cervix, that if this is the uterus and this is the tube opening, this is the fundus, this is another tube, this is the uterus, uterine cavity, and then comes the cervix and then vagina, right? So this part of the cervix which is present in the vagina, right, this part from here, this part is there, right, and this is another part. So we have actually divided the cervix into two parts, one part till here, one part right into the vagina. Okay, so yeah, and in between these two parts is the opening, which is what we call ectocervix. Ectocervix. Oh, sorry. This opening is called this opening is called external os. External os. And this lower part of the cervix is called ectocervix, right? And this above part of cervix is called endocervix. If you didn't get from this picture, I have another for you, don't worry. This is the uterus, really good looking, the cavity, and this is the cervix below. A little part is present inside the vagina. This part which is present inside the vagina, this is called ectocervix, and this above is the endocervix. In between is the os, which is called external cervical os. I hope you are clear with this. This is very much basic anatomy, beta. Right, this os is very much, a kind of os which appears as a dark circular or slit like area which is opening above into the endocervical canal and below into the ectocervix, right? Now let's talk about the benign conditions of the cervix. First is the cervical ectropion, and then the Nabatean follicles I'll talk about. So the benign conditions of the cervix include number one, cervical ectropion. Cervical ectropion is the condition beta what happens in which that if let's suppose this is the cervix beta, again this is the cervix, a little part is present inside the vagina. So what happens in cervical ectropion is a condition where the cells lining the cervix grow into the outer surface of the cervix, right, and can cause the cervix to appear red and inflamed. याद रखें क्या होता है बेटा, ये जो cervix की surface है ना, वो थोड़ी बाहर की तरफ आती है, ठीक है, कुछ जिस तरीके से इसके जो cells हैं ना, they grow into the outer surface of the cervix, right, into the lumen. These are not the polyps. Remember, polyps are just like this kind of polypoid growth they have. This is the polyp. And the one I am talking about right now is the cervical ectropion, which is simply the condition where the cells which are lining the cervix, they grow into the outer surface of the cervix, right? And how do they appear? They appear red and inflamed. They appear red and inflamed. Okay, so cervical ectropion is the condition where the cells lining the cervix, they grow outward, right, on the surface, and they appear red, they appear inflamed, right? और ऐसी outgrowth की वजह से there must be intermenstrual and postcoital bleeding. Obviously when these cells rupture or they shed, so they come up with the intermenstrual bleeding, that is the bleeding other than those 5 days of the bleeding, and the postcoital bleeding obviously due to the penetration. If the penis goes right this way, the penis will surely hurt these cells, and if these cells are hurt by the penis, then these cells will obviously shed, and due to shedding you will feel some, you will come up with some bleeding, that is the postcoital bleeding. And some women may present with the excessive, clear, odorless, mucousy discharge. Mostly female,
they do not come up with this complaint. Normally they are all okay. Only thing they have is the intermenstrual and the postcoital bleeding. Only thing they have is intermenstrual and the postcoital bleeding. But some women with the cervical ectropion may also complain of this mucousy discharge. So be careful. Right, beta. So cervical ectropion is a condition in which the cells lining the cervix, they are grown outward, right, and they are asymptomatic, by the way, but they may cause bleeding between the menses and postcoital bleeding, right? I hope you are clear with this, beta. The reason is not clear why the cells are growing outward, but it may be due to the puberty. Just a second. Yeah, maybe at the puberty you may come up with this condition, maybe due to the use of some contraceptive pills, and maybe due to pregnancy. This is normal condition and it gets resolved, right? If mild. If severe, then you have to give the proper treatment, obviously. So what are the three things that influence the cervical ectropion? As it mentioned that the cervical ectropion develops under the influence of 3 P's: puberty, pill एंड प्रेगनेंसी. ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये cervical ectropion बनता है. ठीक है बेटा. So what is the treatment? ट्रीटमेंट इज़ चेंज द ईस्ट्रोजन बेस्ड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स. अगर आप कंट्रासेप्टिव ऐसे यूज़ कर रहे हैं जिसमें ईस्ट्रोजन है तो प्लीज़ उसको चेंज कर दें, क्योंकि इसको आउटग्रो कराने में ईस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो फिर सर्जिकली हमें इसको सही करना पड़ता है. दैट इंक्लूड्स द सर्वाइकल एब्लेशन, यूजुअली विद द हेल्प ऑफ द क्रायोकॉटरी प्रायर टू द ट्रीटमेंट. ठीक है, आप कोई भी ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं इसको सही करने के लिए, उसके अंदर ईस्ट्रोजन नहीं होना चाहिए. अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ईस्ट्रोजन नहीं होना चाहिए. और इसके अलावा दूसरा तरीका है कि इसको आप एब्लेट कर दें. एब्लेट किस तरीके से करेंगे? क्रायोकॉटरी यूज़ करके. ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट देकर इसको हम पूरा जला देते हैं, सड़ा देते हैं यहाँ पे. ठीक है, और इसके अलावा सॉरी, हाँ बस ठीक है, इट्स गुड. प्रायर टू ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आप मेक श्योर करें कि यहाँ पे आप सर्वाइकल और लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट के स्वैब्स ले लें, ताकि पता चले कि कोई किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है मौजूद पहले से. ठीक है, और दूसरा सर्वाइकल साइटोलॉजी शुड बी परफॉर्म्ड टू एक्सक्लूड द प्री मेलिग्नेंसी एंड मेलिग्नेंसी. बेटा ये रहा आपका सर्विक्स. ठीक है, और ये रही सर्विक्स में आउटग्रोथ जिसको आप कहते हैं सर्वाइकल एक्ट्रोपियन. ठीक है, इसकी एब्लेशन करने से पहले, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट डालने से पहले, यानी कि प्रायर टू ट्रीटमेंट आप मेक श्योर करेंगे सर्विक्स के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है. क्योंकि ज़ाहिर सी बात, अगर पहले से ही इन्फेक्शन मौजूद है और अगर बाहर से आप इंस्ट्रूमेंट डालेंगे तो वो इन्फेक्शन विल गेट सीवियर. तो इन्फेक्शन को पहले रूल आउट करें, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्विक्स का और लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट के आप स्वाब्स लेंगे. स्वाब लेके कंफर्म करेंगे कोई एसटीडी तो मौजूद नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके सर्वाइकल साइटोलॉजी भी देख लेंगे कि पहले से कोई मेलिग्नेंसी या प्री मेलिग्नेंट कंडीशन तो मौजूद नहीं है. क्विकली रिकैप करते हैं सर्वाइकल एक्ट्रोपियन को. सर्वाइकल एक्ट्रोपियन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है बेटा, जो सर्विक्स के लाइनिंग सेल्स होते हैं दे ग्रो आउटवर्ड, आउटर इनटू द सरफेस ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, जिसकी ये अपीयर कैसे होते हैं? रेड और इन्फ्लेम्ड. वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन इंटरमेंस्ट्रुअल और पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग करा सकते हैं. कुछ औरतों में म्यूकसी डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट करते हैं. ये क्यों होते हैं? ये 3 P's हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं. एक तो प्यूबर्टी पे ये आ सकते हैं, एक पिल्स लेने की वजह से जिसमें ईस्ट्रोजन हो खास करके, और प्रेगनेंसी की वजह से भी ये हो सकते हैं. ट्रीटमेंट क्या है? ईस्ट्रोजन रखने वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स बंद कर दें, क्योंकि इसको डेवलप करने में ईस्ट्रोजन का बड़ा रोल होता है बेटा. और अगर ये सीवियर हैं तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एब्लेट करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा सर्जिकली. तो क्रायोकॉटरी यूज़ करते हैं, उसको हम एब्लेट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले, कोई भी इंस्ट्रूमेंट डालने से पहले मेक श्योर करें कि इन्फेक्शन नहीं है. इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए आप जो है स्वाब लेंगे, स्वाब लेके उसको कल्चर करेंगे और देखेंगे कि कोई ग्रोथ तो नहीं है. उसके अलावा बेटा आप जो है सर्वाइकल साइटोलॉजी भी करेंगे ताकि अगर मेलिग्नेंसी है तो वो भी रूल आउट हो जाए. आफ्टर द सर्वाइकल after the cervical ectropion comes the another condition of cervix, that is the Nabatean follicle. Let me describe this to you.